Subscribe to this channel and press the bell icon so that you will not miss any of my latest video. So let's get started. फ्रेंड्स, चॉकलेट गनाश एंड वाइट चॉकलेट हम यूज़ करेंगे। एंड चॉकलेट गनाश कैसे बनती है मैंने अपनी केक वाली वीडियो में बताया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं यहाँ कटोरी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। डोनट की शेप बनाने के लिए मैं यहाँ ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको कढ़ाई में डालकर 2 to 3 मिनट्स कुक करना है अच्छे से। ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। अब डोनट को अच्छे से चॉकलेट गनाश में डिप करना है। अब मैं वाइट चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। वाइट चॉकलेट मैंने मिल्की बार चॉकलेट मेल्ट करके बनाई है। आप चाहें तो डायरेक्ट मार्केट से ला सकते हैं वाइट चॉकलेट। Now I'm using chocolate gems for garnishing. फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड प्लीज़ इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है।